There's a God of rain, there's a God of wind, there's a God of making you succeed in wars, there is a God of sorrow, there is a God of happiness, and there is a God of joy. But time proved, then the time said, and it was proven that those all myths were human created. Now in Roman times there were different myths. There were myths for power, there were myths for creating states which did not actually existed. So he argues that those myths controlled the human psyche, brain and work. This was his argument. And he comes now, we humans have created this artificial intelligence. And he links it with the Nazi Germany. He says it is not the story of that I am talking of some Greek time or I am talking of some 1,000 centuries past or before Christ details. No, I'm talking of today. I'm talking just 100 years past, that how the men created those machines and how those machines destructed the human race. Now this is a case study, ladies and gentlemen. So we as humans first have to be prepared. We have to be prepared. I agree to what Major Wasim Saab said. I agree to that point where one of the keynote speakers said that the technology is the basis for today's warfare. It has recently happened. It has recently happened in Pakistan-India conflict. You know that. It is in the public knowledge that India has unilaterally मेरे पानी को रोक दिया. पानी मेरी जिंदगी है. I know the history that these settlements and civilizations over the course of thousands of years now, they have पानी के नजदीक उन्होंने अपने आप को आबाद किया. पानी life है. Water means life to me. If somebody takes away my riparian rights as Lord Riparian, if somebody stops my water, if somebody made me India or any upper riparian, मैं एक केस स्टडी आपके सामने रख रहा हूं, तो वो तो मेरी जिंदगी मुझसे छीनने की बात कर रहा है. अब इसमें क्या एक लेमैन की जो इंफॉर्मेशन है, जो उसकी नॉलेज है, विल इट बी गुड और विल दैट नॉलेज बी गुड? जो नॉलेज आज आप मशीन के जरिए हासिल करेंगे, आपको पता होगा कि एक्वाफायर जोन में मैं कितने हद तक पानी डिग कर चुका हूं. मैं उससे नीचे की जो मेरी जोन है, उसके नीचे से मैं कितना पानी डिग कर चुका हूं. ये जो बहता दरिया का रन ऑफ रिवर वाटर है, ये मेरी एक्वाफायर जोन को कितना स्ट्रेंथन करेगा, ये मेरी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, मेरे जिंदा रहने के लिए. दिस नॉलेज अगेन is to be attained with the techniques of future. If you have to live, you have to know the future. That is a test case for Pakistan to know that कि मेरे पानी के साथ हिंदुस्तान की वो वायदे की वजूहात क्या थी कि मगरबी दरिया के 80% के ऊपर मेरा हक था और मशरकी दरियाओं के 20% पर उसका हक था. राइपेरियन लॉस है वहां पर. ब्रह्मपुत्र 38% हिंदुस्तान का पूरा करता है, तिब्बतियन वाटर लेक उसका पानी पूरा करती है. तो शेड बेसिन्स में से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई थी जो हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक थी, वो यूनिलेटरली खत्म करेगा. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, young boys and girls and students sitting here, you have to be equipped with this knowledge, and machine knowledge is the knowledge which will determine precision, perfectness, substantiation of your argument that what you are saying. मैं एक बात आपसे और भी कहना चाहता हूं कि इस मौके में, these are not very good times when we are interacting. There's a lot of stress, there's a lot of एक तशक्कर का एहसास भी है, एक तफख्र का एहसास भी है. ये मेरी जिंदगी की सबसे प्राउड मोमेंट भी है. But yet at the same time I'm a worried head. I have seen India violating my territorial sovereignty. I have seen India blaming me for that act which I have not done. I have asked for evidence. No evidence have been proven. I am a country जिसने 90,000 से ज्यादा लाइफ लॉस फेस किया है, शहादतें दी हैं हमारी अफवाज ने, हमारे सिविलियन ने.
हमने 150 बिलियन 200 बिलियन के करीब यूएस डॉलर्स की इकोनॉमी का स्ट्रेन बर्दाश्त किया है इस वॉर ऑफ टेरर में।